रिसर्च रंगपुर मलानिया आरसपुरा जम्मू के यूट्यूब चैनल पे आप सब 8th क्लास के बच्चों का वेलकम करता हूँ। आज मैंने लेसन 1 लिया बुक का, हाउ टीचर्स लर्न। इस कहानी में, इस लेसन में हमें जो बताया गया है वो है कि एक लड़की है जिसका नाम नूरा है और 5 साल की उम्र है। एक बार वो वीकेंड करने के लिए कहीं थी, तो उसके वहाँ एक जो ऑथर था, जो लेखक था, वो गया और किसी ने उस बच्चे को पढ़ाने के लिए उससे अनुरोध किया और उन बातों का विवरण इस कहानी में है कि सिर्फ टीचर ही बच्चे को नहीं पढ़ाते, कई बार बच्चा भी टीचर को कोई चीजें सिखा जाता है। ये इस तरह से कहानी है और टीचर को इस बात के लिए अवेयर करती है कि किस तरह से हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बच्चे की नज़र के हिसाब से देखना चाहिए। सिर्फ अपने हिसाब से देख के टीचर अगर डिसाइड करेगा तो ही कैन नॉट बी गुड टीचर। ये बात इसने इस लेसन में बताई हुई है। जो एक बालिका है, लड़की है, गर्ल है, वो 5 इयर्स एज की है और उसका नाम नूरा है। तो लेट अस नाउ गो टू द समरी। Here the summary about how teacher learn. There is no doubt about the fact that teacher plays an important part in child's upbringing as he opens the world of learning for him or her. But this chapter tells us that sometimes children can also teach the teachers about learning. इसमें लेखक ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि टीचर ही बच्चे की अपब्रिंगिंग, जो स्कूलिंग स्टार्ट होती है, जो स्टार्ट होता है पढ़ने का, उसको क्या करता है, वो उसकी दुनिया, लड़की हो या लड़का, उसको ओपन करता है, खोलता है। बट ये चैप्टर हमें क्या करता है, ये सिखाने का टीचर्स को मौका करता है कि हाउ टीचर्स चिल्ड्रन आल्सो टीच। बच्चे भी क्या करते हैं, टीचर को टीच कर जाते हैं अबाउट देयर learning. The author of this chapter is John Holt. He narrates an incident which enlightened him about a child's learning methodology. He was visiting a friend's family over a weekend. उसने क्या किया, एक बार अपने दोस्त के घर, वीकेंड का मतलब होता है, फॉरेन कंट्री में इट इज ट्रीटेड एज वीकेंड मीन सैटरडे एंड संडे। बट उसको वहां एक नूरा लड़की मिली जो उसकी डॉटर थी और फैमिली ने आस्क किया उसको कि उसको ये बुक हॉप एंड पॉप टीच करा दे, पढ़ा दे। इन ड्यू कोर्स द नरेटर फाउंड दैट दो नूरा वाज ए ब्राइट चाइल्ड, ऐसे अगर देखा जाए तो नूरा बहुत अच्छी लड़की थी, जट शी फाउंड सर्टेन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड कुड नॉट रिकॉग्नाइज। ऑल्दो वो बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ जो वर्ड्स थे वो डिफिकल्ट थे, मुश्किल थे, जिनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करती थी फ्रॉम पेज टू पेज। ए वर्ड विच शी हैड करेक्टली रेड अर्लियर, कुछ शब्द उसने पहले सही से पढ़े होते और मिसरेड हर। दिस हैपन नंबर ऑफ टाइम्स। एक पेज पे वो बिल्कुल सही लफ्ज को पढ़ती है और अगले पेज पे वो मिसरेड करती है, उसको सही नहीं पढ़ती। ये बहुत बार हुआ। द नरेटर फेल्ट अनाइड। नरेटर जो लेखक था ये दुखी हुआ। देन नूरा वाज जस्ट बीइंग ए केयरलेस, or was simply not making an effort to learn, या उसको लग रहा था कि वो सीखने की कोशिश नहीं कर रही। But then the narrator remembered a learning experiment he had done years earlier. He tried to read a page of printing in some Indian language and had tried to find words which looked similar. It was difficult for him. That page looked nothing but a jumble of strange shapes. Then he understood that for the child learning process is just same. We recognize the words. It takes child some time to get used to the shape of letters and words to see at a glance similarities and differences. The narrator जो लेखक है is of the opinion, उसकी ये राय थी, child's formal instruction should begin only after he has given ample time to be familiar with the
लुक ऑफ लेटर एंड वर्ड्स। नरेटर की एक राय बनती है कि जो चाइल्ड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है वो कब शुरू होनी चाहिए, जब बच्चे को बहुत सारा टाइम मिल जाए वर्ड्स और लेटर को लुक करने के लिए, देखने के। इनफैक्ट looking at books and magazines by child is a wise and necessary first step to reading before and giving him formal education। ये वो स्टेप है जिसमें बच्चा क्या करता है, डिफिकल्ट वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको आगे बढ़ने में अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस लेटर में जो वर्ड्स इस लेसन में आएंगे वो ज्यादा है वीकेंड। वीकेंड का मतलब है सैटरडे एंड संडे। बिगनर्स हु जस्ट बिगिनिंग टू लर्न। अपब्रिंगिंग मीन्स ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इनलाइटन, फ्री फ्रॉम प्रीजुडिस, इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन, इन सबसे हटके। डिफिकल्ट, हार्ड, मिसरेड, read something wrongly, particularly, especially, explaining mean making something plain and clear, rarely, seldom, suggested, put something for consideration, happen, occur by chance or otherwise, strange, unusual, learning, gaining knowledge, skill, studies, figure out, understand करना, skip it, leave it out, bluff, pretend to deceive। ये था समरीज लेटर्स। और अब हम चलते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन के ऊपर जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। हु वाज नूरा? हाउ डिड शी बिकेम ए फ्रेंड ऑफ द टीचर? नूरा वाज ए 5-year daughter of the family. The author was visiting over weekend. She came to the teacher to seek help in reading a book, Hop and Pop. In this way, she became friend of the teacher. How did the teacher observe Noora by learning? At first, the teacher observed Noora by sitting silent and still, but she got stuck over some word. The teacher gave her some suggestions. He also told her to skip the words she found difficult and try them later. But odd things happened with Noora. Why was the teacher puzzled? The odd thing that happened with Noora was that she misread a word she had correctly read earlier, and this happened number of times. The teacher was puzzled because Noora was not a careless child and he could not find a reason for such forgetful behavior. Why was Noora careless child? How do you know? Noora was not a careless child, as the teacher himself noticed that she was putting all her attention and concentration in the reading. So next question, fifth question. Why should the teacher understand the problem of the child? As a teacher should understand the problem of the child from the child's perspective. He should try to look at the problem from child's eye. Only then can he understand the true nature of the problem. What experience popped into the teacher mind after Noora learning problem? The teacher remembered learning experience he had some years ago when he had tried to read a printed page of Indian languages. He had found this task that very difficult, as a page that looked like a jumble of strange symbols to him. He had found it very difficult to recognize even similar shaped words. Why are the children unlettered homes at disadvantage? The children unlettered homes are at disadvantage because they lack familiarity with shape of word and letters, so they are at a disadvantage to start learning to read. Question 8. Why should teacher How did teacher learn from Noora? Is the teacher learned that while the teacher the teacher learned that while teaching children, we should not be surprised or upset by the child's slowness or seemingly stupid mistakes. We should be patient. We should be we should be patient and try to understand the child's difficulty from the from his eyes. Only then can we become effective teachers. In the text,
The author keeps using American expression to figure out the following words, to guess, to reason out. So answer is to recognize, B part. He taught me to play piano. I learned to play it. These two sentences describe the same action from different point of view. Here we are given two sentences. He loaned me some clothes. I, so I again borrowed. He sold me an old piano. I bought. He chased me. I bolted. I gave him a glass of water. He dash drank it. We conquered the enemy. They surrendered. These are the five up to E part. Some suffixes like al, il, ish are alphabetically, angel, angelic, shape, shapely or shapeless. शेप का shapely or shapeless, book, bookish, man, manly, government, it is governmental, these are some words where you have to add the to make it adjective, and some of them are left out, and in the exercise PDF shape I will send you soon, or students I have just given you the lesson how teacher learn in Hindi, its summary, its textual questions, and its language work. I hope you have understand it well. You are stay home, stay healthy, and learn it properly so that you are, will not be like behind the other students who are preparing in different schools. Thank you once again, students.